आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। कौन कौन से हैं देखते हैं। बर्थ को हम लोग किससे मतलब सिग्निफाई करते हैं, मतलब क्या साइन है हम लोगों का। बुद्ध जी का बर्थ लोटस। पहला सरमन धर्म चक्र, परिवर्तन प्रवर्तन, ठीक। इनलाइटमेंट बोधि ट्री, डिपार्चर हॉर्स, ठीक। बर्थ लोटस, लोटस सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रिप्रेजेंटिंग बुद्ध बर्थ। फर्स्ट sermon धर्म चक्र प्रवर्तन, द व्हील ऑफ धर्म signifies the first sermon at Sarnath, initiating the spirit of Buddhist teaching. Enlightenment Bodhi tree, Buddha attainment enlightenment under the Bodhi tree at Bodh Gaya. Great departure हर्ष। कंथका, क्या नाम था हर्ष का, कंथका। बुद्धा's renunciation, leaving his place in search of truth, symbolizing by his हर्ष कंथका, ठीक। कर्मापा लापा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो ये कग्यूपा से बिलोंग करते हैं। कर्मापा लामा इज ए स्पिरिचुअल लीडर ऑफ कग्यूपा सेक्ट। कर्मापा लापा कग्यूपा, वन ऑफ द फोर मेजर स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। कग्यूपा सेक्ट emphasize meditation practices and oral transmission of teaching founded by Marpa and Milarepa. गेलेगपू क्या है, न्यूएस्ट स्कूल फाउंडेड बाय जे सैंगफा, एसोसिएटेड विद दलाई लामा लिनिएज। गेलेगपू, ओके। साक्यापा, known for its scholarist tradition, and Lamdre, path and fruit, teachings founded by Sachin Kunku Kingpo. Ligmapa, the oldest school, also called Nyingma sect, based on Padmasambhava's teaching, and the ancient Tantra. Which of the following statement is correct about Lord Buddha? He was born in Kapilvastu, ठीक है। He attained enlightenment in Bodh Gaya, सही है। He discarded the Vedic religion, सही है। He preached noble truth, सही है। Birth, four noble truth. Birth, Buddha was born in Lumbini near Kapilvastu 563 BC. Enlightenment attained at Bodh Gaya under Bodhi tree at age of 35, सही है। Vedic religion, he rejected Vedic rituals, caste system and animal sacrifice, promoting a moral and ethical path, सही है। In noble truth, Buddha's teaching included four noble truths, which are life means suffering, dukh, origin of suffering is attachment, samudaya, ठीक। दुख मतलब सफरिंग, फिर समुदय, origin of suffering is attachment, फिर cessation of suffering is attainable, निरोध, ठीक। path of cessation of suffering is the eightfold path, उसे क्या कहते हैं, मग्गा। महाबोधि टेम्पल has been built at Bodh Gaya where Gautam Buddha received enlightenment, महाबोधि टेम्पल। Mahabodhi temple in UNESCO World Heritage Site is located at Bodh Gaya, marking the site of Buddha's enlightenment. It is situated on the bank of Niranjana River, modern day Falgu River. किस नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है, फल्गु या निरंजना रिवर के। द पीपल ट्री अंडर द बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट इज ए सिंबॉलिक ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसकी 5वीं पीढ़ी चल रही है अभी। Emperor Ashok built the original temple around 260 BC. At the present structure dates to the Gupta period, 5th to 6th century AD, ठीक। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, 5th। द ओरिजिनल बोधि ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टाइम्स इंक्लूडिंग किंग्स सशंक इन 7th century AD. द करेंट बोधि वृक्ष इज द 5th generation tree planted under orders of Alexander Cunningham, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन द 19th century। मतलब कनिंघम ने बोला कि फिर से लगाओ। हुएंग सैंग ए चाइनीज ट्रेवलर, कौन, हुएंग सैंग, आल्सो डॉक्यूमेंटेड द हिस्ट्री ऑफ ट्री ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, हुएंग सैंग, ओके। Which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river Niranjana? तो ये है बोध गया। बोध गया is situated on the bank of Niranjana river, now Falgu river in Bihar. It is the site of Buddha's enlightenment, marked by Mahabodhi temple and the Bodhi tree.
कुशीनगर बुद्धा's महापरिनिर्वाण साइट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. लुम्बिनी बुद्धा's birthplace in present day Nepal. Rishipattan, another name of Sarnath, where Buddha gave his first sermon, not related. हाँ ठीक. ऋषिपत्तन. द टीचिंग ऑफ बुद्ध आर रिलेटेड टू, मतलब बुद्ध का टीचिंग किससे रिलेटेड है? स्पिरिट डिस्प्यूट नहीं, सेलिबेसी नहीं, रिलीजियस रिचुअल नहीं, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट. Buddha's teaching emphasizes moral conduct, mental discipline, and wisdom. Eightfold Path promote right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. ठीक. Who among the following wanted to become the leader of Sangh even during the lifetime of Buddha? तो ये थे उनके मतलब रिश्तेदार ही थे. देवदत्त, Buddha cousin, initially a devout monk, later developed a mission to lead the Sangh. He attempted to assassinate Buddha and create a schism, फूट schism मतलब, in the Sangh but failed. ठीक है. Whom of the following did Gautam Buddha nominate the leadership of Buddhist Sangh after his death? किसी को नहीं. Buddha did not appoint a specific successor for the leadership of Sangh. Instead, he advised the disciple to follow the dharma, teachings and vinaya, discipline as their guiding principle. ठीक. Mahakasyap, however, naturally emerged as a leader, presiding over the first Buddhist council. ठीक है. The concept of eightfold theory forms the theme of धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र. पहला जो उन्होंने दिया था कि 4 सत्य और 8 रास्ते बताए थे, तो वही है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र. मतलब पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र आल्सो नोन एज टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म इज बुद्धा's फर्स्ट sermon एट सारनाथ. ठीक. इट इंट्रोड्यूस द 4 noble truths and 8fold path which guide liberation from suffering nirvana. 8fold path include right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. ठीक. Deepavams, an ancient Pali chronicle of Sri Lanka's Buddhist history. ठीक. Divyadan, a Sanskrit text containing Buddhist legends focusing on Ashoka's life. Divyadan. Mahaparinibban, describe Buddha's last days and Mahaparinirvan. Not focused on eightfold path. Which of the following are true about Gautam Buddha? He believes in karma. True. अच्छा. He believes in कर्म सही है. He believes in rebirth सही है. Attaining निर्वाण सही है. Belief in the power of God नहीं था. Buddha's belief karma action determine future outcomes. Rebirth, believed in cycle of birth and death influenced by karma. Nirvana, the ultimate goal to end suffering, achieving liberation from samsara. No belief in God. Buddhism is non-theistic, focusing on self-realization and inner enlightenment. ठीक है. The entry of women as bhikshuni into the Buddhist Sangh was allowed by Gautam Buddha at Vaisali. The entry of women as bhikshuni in the Buddhist Sangh was allowed by Gautam Buddha at Vaisali. सही है. Vaisali Buddha permitted women to join Buddhist Sangh as bhikshunis on request of disciple Anand. The first woman to join was Mahaprajapati Gautami, Buddha's aunt and foster mother. Buddha set 8 special rules, Guru Dhammas, for female monks, bhikshunis, to maintain discipline and order. What is Tripitaka? Tripitaka क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ प्रीचर्स ऑफ बुद्ध. सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म. Tripitaka, 3 baskets, is a sacred Buddhist text divided into 3 sections. Sutta Pitaka, discourses of Buddha, focusing on dharma. Vinaya Pitaka, rules for monastic discipline governing the Sangha. Abhidhamma Pitaka, philosophical and doctrinal teaching, providing deeper insight and Buddhist philosophy. 3 monkeys of Gandhiji: see no evil, hear no evil, speak no evil, unrelated to Buddhism. Brahma Vishnu Mahesh, the Hindu trinity representing creation, preservation and destruction. 3 रत्ना महावीर. जैनिज्म 3 जेबल्स क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. ठीक. नॉट बुद्धिज्म.
Tripitak texts are related to which religion? Buddhism. Tripitaka is a primary canonical text of Buddhism containing Buddha's teaching and monastic rules. It is written in Pali, particularly associated with Theravada Buddhism. While Mahayana Buddhism also considers Sanskrit texts like Mahayana Sutras. Which of the following Buddhist text contains the rule of monastic life? तो ये विनय पिटक विनय पिटक outlines the code of conduct for monks and nuns, including rules for daily discipline, monastic life, and sangha administration. It includes Patimokkha, a list of 227 rules for bhikshus and 311 rules for bhikshunis. मतलब विनय पिटका में 227 भिक्षुस के लिए हैं और 311 रूल्स भिक्षुनीस के लिए हैं. दिघ निकाय नॉट पार्ट ऑफ सुत्त पिटका. Includes long discourse of Buddha. Abhidhamma Pitaka deals with philosophical and doctrinal aspect of Buddhism. Vibhas Shastra, a commentary on Abhidhamma associated with Mahayana Buddhism. ठीक है. यामक belongs to Buddhist Pitaka. यमक किससे बिलोंग करता है? अभिधम्म से. यमक इज वन ऑफ द 7 टेक्स्ट इन द अभिधम्म पिटका फोकसिंग ऑन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. अभिधम्म इंक्लूड धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पन्नति, कथुवथु, यमक, पथन. Which of the following Buddhist literature contain Buddha's sermons on matter of ethics and doctrine? तो सुत्त पिटका पे. ठीक. अभिधम्म पे philosophies हैं. Sutta Pitaka, also known as Sutta Pitaka in Sanskrit, is collection of Buddha's sermon focusing on ethics, doctrine, and moral teachings. It includes 5 निकायस. कौन कौन सा? 5 निकाय. दिघ निकाय, लॉन्ग डिस्कोर्स. मध्यम निकाय, मीडियम लेंथ डिस्कोर्स. संयुक्त निकाय, थीमेटिक कलेक्शन. अंगुत्र निकाय, न्यूमेरिकल कलेक्शन टीचिंग्स. खुड्डक निकाय, मिसेलेनियस टेक्स्ट इंक्लूडिंग धम्मपद. विनय पिटका deals with monastic rules and discipline, not ethical sermons. जातक स्टोरीज, बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्ध illustrating moral lessons. ठीक. अभिधम्म focuses on philosophical and psychological aspect of Buddhism. What does Triratna means to Buddhism? Buddha Dhamma Sangha. Triratna, 3 jewels of Buddhism, represents Buddha, enlightened one, symbolizing guidance. Dhamm, teaching of Buddha, representing path of enlightenment. Sangha, the monastic community. ठीक. Dhamm, teaching of Buddha, और Sangha, monastic community maintaining Buddhist practices and teaching. त्रिपिटक refers to 3 basket of Buddhist scriptures. ठीक. जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक. सील, समाधि संघ, these are aspect of Buddhist practices. सील, समाधि संघ. सत्य, अहिंसा, करुणा, principle of non-violence and truth, associated with Jainism and Hinduism. Consider the following about the features of Buddhist philosophy. कौन कौन सा है? The seed of Buddhist philosophy is traced in the teachings of Gautam Buddha himself. Buddha emphasized leading a moral life for emancipation of human suffering rather than indulging in philosophical problems. दोनों सही है. Buddha teaching laid the foundation of Buddhist philosophy, focusing on practical ethics over theoretical speculation. He encouraged living a moral life through a noble eightfold path, addressing human suffering, dukh, promoting nirvana, liberation. Buddhism differs from Upanishadic thought by rejecting metaphysical speculation about the soul, Atma, and Brahma, universal spirit. Upanishadic thought by rejecting metaphysical speculation about soul and Brahma, Atma, and Brahma, universal spirit. In ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called Pavaran used to be held. It was the
Confession by monks of their offenses committed during the rainy season. Pavaran. Confession by monks of their offenses committed during the rainy ये ऑफेंस मतलब रेनी सीजन. During the 4 months of rainy season, Vas monks remained in monasteries, Buddha Vihar, avoiding trouble and teaching. Pavaran ceremony marked the end of Vas, where monks confessed their misdeeds, promoting self-purification and discipline. Pavaran. Asokaram monastery was situated at Pataliputra. Asokaram monastery was established by Emperor Asok in Pataliputra, modern Patna, Bihar, under the supervision of monk Indragupta. It was a significant center of learning associated with the spirit of Buddhism. विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में. विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस पगोड़ा इन राजगीर Bihar stand 400 meters high, making the highest stupa in world. Built by Nopponzon Myojo sect of Japan, it symbolizes peace and Buddha's teaching. Vishwa Shanti Stupa. The giant Buddha statue of 80 meters at Bodh Gaya was constructed by Japanese. 80-foot Buddha statue in Bodh Gaya, Bihar was constructed with support of the Jikoyo sect of Japan. The statue is in meditation, Dhyan Mudra, seated on a lotus made of sandstone and red granite, representing peace and spirituality. It took 7 years to complete, reflecting strong Indo-Japanese cultural ties. Where the word stup has been used for the first time, Rigved में. Stup is first found in Rigved. It signifies a tree stem or mound. Rigved refers to a stup built by King Varun, describing it as a raised heap without a foundation, possibly representing burial mounds or memorial structure. Stupas evolved during Buddhism into a mound-like structure that held relics of Buddha and other saints, symbolizing Buddhist philosophy. ठीक है. अच्छा, इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो बुद्ध के लाइफ से कोई वो नहीं. सारनाथ पहला वो दिया इन्होंने. सांची यहाँ मतलब यहाँ गए नहीं थे लेकिन यहाँ स्तूप है. बोध गया, बोध की प्राप्ति हुई. कुशीनारा मृत्यु हुई. सारनाथ एसोसिएटेड विद बुद्धास फर्स्ट सरमन धर्म चक्र प्रवर्तन. बोध गया, Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree. Kushinagar, place of Buddha's Mahaparinirvana. Sanchi. While having an important stupa built by Ashoka, it does not have any direct connection with Buddha's life event. It serves as Buddhist pilgrimage center and symbolizes Buddhist architecture, but lacks historical event linked in Buddha's biography. ठीक. With reference to the ancient India, consider the following statements. तो स्टेटमेंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन. ऐसा नहीं है, ये तो ऋग्वेद में ही था. स्तूप वॉज जनरली ए रिप्रोसिटी ऑफ रिलिक्स. सही है. स्तूप वॉज ए वोटिव एंड कमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. सही है. स्टेटमेंट 1. द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा प्रीडेट्स बुद्धिज्म विथ मेंशन इन ऋग्वेद, अथर्ववेद एंड अदर वैदिक स्ट्रक्चर. ठीक. स्टेटमेंट 2. स्तूप सर्व एज ए repositories of relics, particularly in Buddha's ashes, and were venerated by followers. मतलब जो स्तूपा हैं वो अवशेष हैं, मतलब अवशेषों का जो है वो कोष है. ठीक. जैसे बुद्ध जी का एसेज मतलब उनकी राख का, जो उनके फॉलोअर्स जो हैं वेनरेटेड मतलब पूजा करते हैं. स्तूपास वेयर ऑल्सो वोटिव एंड कमरेटिव, यूज्ड बाय बुद्धिस्ट टू हॉनर इवेंट्स, टीचिंग एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. वोटिव क्या मतलब कोई खुशी दान वान देना या किसी के लिए बनवा देना. ठीक. कमरेटिव मतलब याद में बनाना. यूज्ड बाय बुद्धिस्ट टू हॉनर इवेंट एंड टीचिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक. विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा? पता नहीं. भरहुत स्तूपा बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, अशोका रेन. ठीक. ये 3rd century BC है. सांची कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोक, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग सुंग पीरियड.
थर्ड से लेके फर्स्ट तक, थर्ड सेंचुरी BC से लेके फर्स्ट सेंचुरी CE तक। अमरावती स्तूप बिल्ट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, सेकेंड सेंचुरी BC to थर्ड सेंचुरी CE। धामिक स्तूप एट सारनाथ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अशोकाज reign, later renovated during Gupta period. The chronological order is disputed among historians, as a certain स्तूप were renovated and inspected over centuries, leading to confusion in dating. ठीक। Anatmavada, no self, Anatmavada, no self is the doctrine of Buddhism. Anatmavada or Anat is a core doctrine of Buddhism. Anatmavada, Anat, which proposes no internal self or no soul. Buddha's teaching rejected the Hindu concept of Atma and emphasizing impermanence, Anitya and non-self. ठीक। Anatmavada is connected to प्रतीत्य समुत्पद, प्रतीत्य समुत्पद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, विच एक्सप्लेन हाउ लाइफ एंड एक्सिस्टेंस आर कंडीशनड फिनोमिना। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। तो थैंक यू। अब अगले पार्ट में बाय बाय।